टेलोजन एफ्लूवियम के कॉजेज़ कोई मुझसे पूछ रहा था कि उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। लॉर्ड्स ऑफ कॉजेज़ बिहाइंड द टेलोजन एफ्लूवियम, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मेल जेंडर में और फीमेल जेंडर के अंदर डिफरेंट टेलोजन एफ्लूवियम के कॉजेज़ हो सकते हैं। लेकिन जो उसने स्पेशली पूछा है वो कहता है मैं एक्ने की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, आइसोट्रेटिनॉइन ले रहा है। तो आइसोट्रेटिनॉइन क्या करता है, वो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है and it causes telogen effluvium, active telogen effluvium. And whenever you are asking the question in taking history from the patient that if he is or she is taking isotretinoin for this much period, you should stop the isotretinoin first, let the scalp become normal and then go for the surgery. This is very much important. If you are going to treat a patient who has already been taking these kind of medicines, you should not be going for hair transplant treatment. Absolutely इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है. The videos which I'm doing nowadays are for doctors treating physicians only. Thank you very much.